गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का थर्सडे जीएसटी लाइव डिस्कशन में स्वागत है आपका। आज का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वी ऑल नो दैट देयर इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। व्हाट इज दैट टॉपिक? मोहित मिनरल जजमेंट is made available to all of us. Mohit mineral judgment was in favor of SSC, and finally the Supreme Court has given the verdict against the department. What was that? That if my transaction is import of goods, अगर मेरा ट्रांजेक्शन इंपोर्ट ऑफ गुड्स का है और वो जो कॉन्ट्रैक्ट है, दैट कॉन्ट्रैक्ट इज ऑन सीआईएफ बेसिस. व्हाट डज इट मींस? द कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड द फ्रेट is the responsibility of the supplier located out of India. Repeating again, you are importing the goods and the goods are imported under the contract of the CIF basis. Now the department is asking that okay, you are paying the IGST, custom duty, etc. That is okay, but additionally you need to pay the IGST under reverse charge because there is an import of service also. नमस्कार, लाइव डिस्कशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है. मीनवाइल आई एम एक्सप्लेनिंग द टुडे जजमेंट एंड मीनवाइल अगर आपका कोई क्वेश्चन है प्लीज पुट योर क्वेश्चन इन द चैट. मैं टाइम टू टाइम क्वेश्चन का आंसर करता रहूंगा. तो बात क्या हुई? द डिस्कशन वाज दैट अगर सीआईएफ में मैं इंपोर्ट करता हूं. नमस्कार जयंत विश्वास जी. अगर मैं सीआईएफ में गुड्स का इंपोर्ट करता हूं तो ठीक है, गुड्स तो इंपोर्टेड है, क्या ये सर्विस भी इंपोर्ट मानी जाएगी? इस पर्टिकुलर पॉइंट को बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया इन द टुडे जजमेंट. For treating the transaction as an import of the service, we know there are the three conditions. The supplier should be located out of India, the recipient should be located in India, and place of the supply should be in India. मुद्दा क्या था? मुद्दा था रिसिपिएंट का. क्या रिसिपिएंट इंपोर्टर रिसिपिएंट माना जाएगा? वेरी गुड इवनिंग अंकेश अग्रवाल जी. क्या इंपोर्टर जो कि गुड्स इंपोर्ट कर रहा है वो सर्विस का भी रिसिपिएंट माना जाएगा? उन्होंने सेक्शन 2 क्लॉज 93 की डेफिनेशन को यूज करते हुए उन्होंने एक्सप्लेन किया, द पर्सन हु इज लायबल टू पे द कंसीडरेशन इज द रिसिपिएंट. द पर्सन हु इज लायबल टू पे द कंसीडरेशन इज द रिसिपिएंट. ट्रांजैक्शन क्या था? सीआईएफ का था. मतलब कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट is the responsibility of the party located out of India supplier. अब शिपिंग लाइन कंपनी चाहे इंडिया की है या आउट ऑफ इंडिया की, डजंट मैटर. उन्होंने कहा कि इट इज इमैटेरियल, बट द पर्सन हु इज लायबल टू पे, द पर्सन हु इज लायबल टू पे द फ्रेट इज द फॉरेन सप्लायर. मीनिंग देयर बाय अगर 293 कहता है कि रिसिपिएंट वो पर्सन है, 293 कहता है कि रिसिपिएंट वो पर्सन है जो लायबल टू मेक द फ्रेट है. तो देयरफॉर they are saying that in this case the recipient would be the person located out of India, and because the person located out of India is the recipient, therefore importer cannot be considered as recipient, and therefore there is no question of RC. At the same time, they have explained the concept of the composite supply also. हम भी जानते हैं सर, अगर मान लो मिस्टर ए एक सप्लायर है, वो आपको माल सप्लाई कर रहा है, कुछ लोडिंग अनलोडिंग के नाम पे भी चार्ज कर रहे हैं वो सप्लायर, मान लो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज कर रहे हैं,
You being a recipient are making the entire payment. You being a recipient are making the entire payment to the Mr. A. क्या मैं इसको ये कह सकता हूं कि इंपोर्ट ऑफ सर्विस है? कैन आई से नॉट इंपोर्ट ऑफ द सर्विस, कैन आई से दैट द रिसिपिएंट, मैं मान लेता हूं कि ट्रांसपोर्टेशन का चार्जेस है एंड ही इज मेकिंग द ट्रांसपोर्ट का पेमेंट ऑल्सो, whether the recipient is liable to pay the tax under RCM because of the GST? The answer would be big no. Very good evening, Nitin ji. The answer would be big no. Reason, sir, the supplier should be the transporter. Mr. A जो कि supplier of the goods है, because of the composite supply, because of the concept of the composite supply, he is whatever he is adding that will be clubbed together, and जो principal transaction है, पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन का कलर क्या होगा? पूरे के पूरे ट्रांजेक्शन का कलर होगा जो प्रिंसिपल ट्रांजेक्शन है, दैट इज सप्लाई ऑफ द गुड्स, दैट इज सप्लाई ऑफ द गुड्स. सो कहते हैं कि पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन सप्लाई द गुड्स माना जाएगा, एंड देयरफॉर यू कैन नॉट सेग्रीगेट द ट्रांजेक्शन कि भाई ये जीटीए सर्विस अलग से है एंड रिसिपिएंट नीड टू पे द टैक्स अंडर आरसीएम बिकॉज ऑफ द ट्रांसपोर्टर. मिस्टर ए ट्रांसपोर्टर नहीं है. He charging the total value and which would be taxable by considering the definition given in section 2 clause 30 composite supply. सेम बात यहां पे इन्होंने यूज की. अगर वो इंपोर्ट कर रहा है, अगर इंपोर्टर इंपोर्ट कर रहा है अंडर सीआईएफ, how it can be the separate transaction of the import of service is only for the goods, is only the importer, he is the recipient only for the goods, and because सारे ट्रांजेक्शन का टोटल वैल्यू क्लब करते हैं. सेक्शन 5 सबसेक्शन 1 का प्रोवाइजो आईजीएसटी एक्ट का क्या कहता है कि अगर गुड्स इंपोर्ट करते हैं देन द वैल्यू वुड बी डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू द कस्टम, जहां पे इंश्योरेंस का भी अमाउंट ऐड होता है और असेसेबल वैल्यू पे हम जीएसटी पे करते हैं. Assessable value means insurance, freight, everything would be added. But it doesn't mean the transaction would be two categories. The transaction, one is import of the goods, one is import of service. ये judgment 153 पेज का है approx, which we all need to read and try to understand much more things. हमारे काफी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होंगे. आई रियली रिक्वेस्ट एवरीवन टू टेक द प्रिंट आउट or make a soft or save in the desktop, try to understand each and every provisions. एक उन्होंने बहुत अच्छी बात की थी 75C ऑफ आईजीएसटी एक्ट. क्या है 7? सेक्शन 7 ऑफ आईजीएसटी एक्ट बात करता है, सेक्शन 7 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट बात करता है कि इंटरस्टेट सप्लाई की डेफिनेशन क्या है. वेरी गुड इवनिंग संजय जी, वेरी गुड इवनिंग आशीष मिगलानी जी. आप के कोई भी क्वेश्चन है यू कैन पुट द क्वेश्चन इन द चैट, वी कैन डिस्कस लाइव आल्सो. मीनवाइल मैं आपको एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो आज हम सभी को काफ़ी टाइम से वेटिंग था, आज हमारे पास में फुल कॉपी अवेलेबल है. वी आर ट्राइंग टू एनालाइज इन द टाइम टू कम, हम फर्दर और एनालाइज करेंगे. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज पुट इन द चैट, वी विल डिस्कस दैट क्वेश्चन आल्सो. मैं क्या कह रहा था, 75C सेक्शन 7 सबसेक्शन 5 क्लॉज सी ऑफ आईजीएसटी एक्ट. 7 क्या बात करता है? इंटर स्टेट सप्लाई क्या है. सेक्शन 7 क्या बात करता है? इंटर स्टेट सप्लाई क्या है. वहां पे सबसेक्शन 5 क्या कहता है? इन केस ऑफ द गुड्स एंड सर नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग. ठीक है, वो 75C क्या कहता है? अगर कोई ट्रांजेक्शन एसईजेड यूनिट या क्लॉज ए कहता है कि अगर प्लेस ऑफ द सप्लाई आउट ऑफ इंडिया है तो वो ट्रांजेक्शन क्या माना जाएगा? इंटर स्टेट माना जाएगा. क्लॉज बी क्या कहता है? अगर आप एसईजेड यूनिट को सप्लाई कर रहे हो या एसईजेड यूनिट आपको सप्लाई करे विद इन इंडिया, देन वो ट्रांजेक्शन क्या माना जाएगा? हमेशा इंटर स्टेट सप्लाई माना जाएगा. क्लॉज सी ने क्या कहा? नॉट बीइंग डिफाइंड एनीवेयर, नॉट कवर्ड एल्सवेयर, इट इज नॉट एन इंट्रास्टेट सप्लाई एंड नॉट कवर्ड एल्सवेयर, दैट वुड बी ट्रीटेड एज इंटर स्टेट सप्लाई. हाँ मालूम है, लेकिन इसका इस रूल, इस जो हम बात कर रहे हैं जजमेंट, किस जजमेंट के साथ कैसे इंटरलिंकिंग की है, ट्राई टू अंडरस्टैंड. इन्होंने कहा, इस जजमेंट ने कहा जस्ट बिकॉज द गुड्स आर डिलीवर्ड इन इंडिया, इट्स एन इंपोर्ट ऑफ द गुड्स, वी कैन नॉट से द ट्रांजेक्शन इज विद इन द टैक्सेबल टेरिटरी, and because it is within the taxable territory, not being intrastate, so we will treat the same as an interstate supply. Answer is no, it is not a supply at all. ये import of the service है ही नहीं,
क्योंकि सप्लायर मान लो फॉरेन शिपिंग लाइन कंपनी है और रिसिपिएंट जो गुड्स का सप्लायर है जो फॉरेन पार्टी है, बोथ आर आउट ऑफ इंडिया, देयरफॉर इट इज नॉट एन इंपोर्ट और सर्विस, नो क्वेश्चन ऑफ द जीएसटी। काफी डिटेल्ड है, हम आने वाले टाइम पे फर्दर इसको एनालाइज करेंगे इन डिटेल बाय मेकिंग द प्रेजेंटेशन। बट हाँ, अभी जो पॉइंट मुझे मालूम थे दैट पॉइंट आई हैव शेयर्ड विद ऑल ऑफ यू। बट एटलीस्ट हाँ, मैं रिफंड के लिए अप्लाई तब नहीं कर सकता अगर मैंने आरसीएम पे टैक्स पे किया और उस आईटीसी का यूटिलाइज कर लिया। इफ इट इज स्टिल लाइंग इन योर क्रेडिट लेजर, if that particular component is still lying in your credit ledger, you can go for the refund. That was also a very good. So normally हम क्या कहते हैं 54 सबसेक्शन 3 में आईटीसी का रिफंड नहीं मिलता। 54 सबसेक्शन 3 में आईटीसी का रिफंड नहीं मिलता एक्सेप्ट टू केसेस। तो यहाँ पे प्रोबेबली एक्सेस पेमेंट ऑफ द टैक्सेस बोल के रिफंड देना होगा आपको, मतलब जो भी आप रिफंड के लिए अप्लाई करेंगे दैट वुड बी प्रोबेबली एक्सेस पेमेंट ऑफ द टैक्सेस, नॉट एज ए पार्ट ऑफ द इनपुट टैक्स क्रेडिट। बट यस, थोड़ा वेट कीजिए, इन द टाइम टू कम द क्वेश्चन द पॉइंट वुड बी गिवन द इट वुड बी गिवन द क्लैरिटी। हाँ, एक पॉइंट और मैं आपको बता देना चाहता हूँ। अभी जो हमारे एक नेगेटिव पेमेंट, नेगेटिव लाइबिलिटी रजिस्टर, नेगेटिव समथिंग कुछ एक कंपोजिशन में जब हम GSTR4 को फाइल कर रहे थे तो एक प्रॉब्लम आ रही थी, एंड जिसका सॉल्यूशन क्या था कि भाई आपको वापस टैक्स पे करना पड़ेगा, यू ऑल नीड टू पे द टैक्स अगेन, एंड यू कैन सब्सिक्वेंटली फाइल द RFD 01। तो अभी जब आप RFD 01 फाइल करेंगे तो वहां पे एक रेड, जब भी कोई पीरियड सेलेक्ट करते हैं, लेट्स से फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2022, इट्स शोइंग द रेड alert message or red error message कि that please file the refund application of the prior period. So please note one thing, रिफंड का जो कॉन्सेप्ट है वो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है, मतलब आप इन बिटवीन किसी भी पीरियड का रिफंड फाइल नहीं कर सकते जब तक कि पहले की रिफंड एप्लीकेशन आपने फाइल नहीं की है। अगर कोई रिफंड नहीं है देन इन दैट केस यू विल फाइल द नील रिफंड एप्लीकेशन। अब नील रिफंड एप्लीकेशन कैसे फाइल करनी, पीरियड सेलेक्ट करो, हर मंथ को नहीं, एक साथ आप कम्युलेटिव पीरियड सेलेक्ट कर सकते हो, and then when you submit the refund application they will ask you, they will give the message, would you like to file the nil return, just click on yes and it will automatically redirect to the last page जहाँ पे आप OTP के साथ सबमिट कर सकते हो। एक बार वो सबमिट कर दिया उसके बाद आप एक बार वो सबमिट कर दिया उसके बाद आप अपना जो अप्रैल मंथ का है जो आपने टैक्स पे किया था इक्विवेलेंट टू द अमाउंट व्हिच हैज बीन एडजस्टेड इन द नेगेटिव लायबिलिटी, जो नेगेटिव में आ रहा था, टू दैट एक्सटेंट आप रिफंड एप्लीकेशन फाइल करेंगे बाय सेलेक्टिंग द एक्सेस पेमेंट ऑफ द टैक्सेस। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज पुट द क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स सो दैट वी कैन डिस्कस। काफी गैप के बाद में ये सीरीज वापस स्टार्ट की है। आई विल ट्राई माय बेस्ट to continue this Thursday ka discussions. I will try my best to continue that Thursday ka discussion with all of you. Any other point which you like to discuss with me? कोई भी point तो एक बार हम चर्चा कर लेंगे। शिवांगिनी जैन, good evening, very good evening. I have a query other than this judgment. If any ITC showing in the 2B of the previous month, ठीक है, can we claim it in the current month as time limit is now November? See, पहला बात, आपका एनालिसिस तो परफेक्ट है। सी, टू बी क्या करता है, टू बी कहता है कि टू बी में आने के पहले आपको आईटीसी क्लेम नहीं करना। समझ, अगर मैं लेमन लैंग्वेज में समझने की बात करूं तो व्हाट कैन आई से, दैट टू बी में ट्रांजेक्शन जब तक नहीं आएगा तब तक मैं आईटीसी नहीं लूंगा, आने के बाद कब तक लूंगा, जब भी आपकी इच्छा हो, टिल द एक्सटेंडेड टाइम पीरियड जो कि सितंबर है, आफ्टर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। अभी जो आप नवंबर कह रहे हैं ये फाइनेंस एक्ट 2022 का अमेंडमेंट है, but that amendment is not yet effective. So till the time that amendment is not yet effective, we all will say कि जो ये टाइम लिमिट है वो अभी सितंबर है and you can definitely claim within that period. नमस्कार करना साहब। Sir, council can't any intention or information debit from the cash ledger. Question clarify for composition dealer. कह नहीं सकता, fully agree with you.
अभी थोड़ा दिन पहले क्या हुआ था, वही तो बात हुआ था कि जीएसटीएन ने हमें एक मैसेज दिया कि भाई अभी 2B में प्रॉब्लम चल रही है तो 2A के बेस पर आईटीसी ले लो. हाउ GSTN has the right to say something about to take the input tax credit unless and until to that effect जो भी उसको चेंज करना है, रूल में चेंज करना है, नोटिफिकेशन को चेंज करना है, कुछ भी चेंज करना है, दैट शुड बी रूटेड थ्रू नोटिफिकेशन और सर्कुलर और एनी आरओडी रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर. कुछ भी करो, will it be rooted through GST news? Answer would be no. And that is the reason एक दिन के बाद में क्या हुआ था, एक दिन के बाद में वो डिस्कशन जो डिस्प्ले हो रहा था, जो उनकी न्यूज बोर्ड हट चुकी थी एंड एक्सटेंडेड द डेट आल्सो आफ्टर अपडेटिंग द ट्यूबिंग. जयंत विश्वास जी, अगर आपका क्वेश्चन आंसर नहीं हुआ है तो प्लीज रेज द काउंटर क्वेश्चन, डू द आर्ग्यूमेंट, नो प्रॉब्लम एट ऑल. राकेश जी, प्लीज एनलाइटन इन द फ्यूचर ऑफ सेक्शन 60 फॉर लॉट ऑफ द केस पेंडिंग बिफोर डिफरेंट कोर्ट. बहुत जरूरी है सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन कि 16(4) अपने आप में इसकी कोई वैलिडिटी है या नहीं है. क्या ये 16(4) जो कि वैलिडिटी कास्ट करता है, क्या ये अपने आप में अल्ट्रा वायरस है या नहीं है? देयर इज एज ऑफ नाउ देयर इज नो जजमेंट, बट यस, unless and until there would be favorable judgment, we can say 16(4) का टाइम लिमिट इज एप्लीकेबल. एज ऑफ नाउ 16(4) का टाइम लिमिट इज एप्लीकेबल. बट एक बात और है, अगर 16(4) अल्ट्रा वायरस होता है तो काफी बड़ा नुकसान होगा आने वाले टाइम पे डिपार्टमेंट को. वी कैन इजीली से, क्योंकि बहुत सारी आईटीसी जिसके रिगार्ड में टाइम लिमिट के बाद मिली है उसके रिगार्ड में नोटिस इशू हुए थे, द एसएससी हैज पेड दैट टैक्सेस. काफी सारी आईटीसी जो आज तक मैंने क्लेम नहीं की, प्रॉबेबली यू मे से दैट जब तक जीएसटीआर 9 फाइल नहीं किया तब तक मैं आईटीसी क्लेम कर सकता हूँ. इफ इट इज पॉसिबल, इफ इट इज बीइंग अनाउंस्ड, दैट वुड बी वेरी वेलकम जजमेंट, आई कैन से. क्या सेक्शन 39 का जो रिटर्न का बात कर रहा है वहां उसमें प्रॉब्लम को वो हटाएंगे, या एनुअल रिटर्न की बात को भी एप्लीकेबल करेंगे, हटाएंगे, या जो नॉर्मली लिमिटेशन पीरियड होता है 3 साल का, दैट वुड रिमेन एप्लीकेबल और नॉट. ओनली व्हेन द जजमेंट वुड कम इन द फ्यूचर वी कैन से एनीथिंग. इवन इफ आई विल, सो हाँ, रेड मार्क तो खाली एक अलर्ट मैसेज है, रेड मार्क इज नथिंग. रेड मार्क अगर आ रहा है तो उसको इग्नोर कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. Credit note issued but not uploaded in the GSTR 1. How to go about it? If we can credit our liability, if we can't taken credit, our liability will not decrease. See, conceptually I can say Venkatas Babu, if the supplier has not issued the or has not reported the credit note, what is the transaction of the credit note? The supplier has to reverse this reverse the tax, reduce the tax liability, and customer has to reverse this input tax credit. Correct. If we can't taken the credit, our liability will not decrease. Yes, that part is. So you are talking about from supplier or you are talking from the customer angle? Can you please confirm once again? Recipient has to reverse the ITC, that is okay. So supplier has to reduce the liability. For reduction in the liability, the same should be issued within the time limit. If you are not reporting, probably it will not be understood or it will not be treated as the same has been issued within the time limit given in the act. In that case, probably that would tantamount, that would become the loss for the supplier if he has not reported the same. Ha, right. So Prashant Kamaji, simply go to the RFD01, simply go log into the composition dealer, log into the composition dealer, and then select the period. That would be April. Once you select the April, it will throw the error message. What would be the reason? That because we in the composition probably first time taking the refund under excess payment of the taxes. In that case, you first have to select all the prior period. In one shot, you can select all the prior period, means till March 2022. Whenever the registration is being taken from that period till March 22, select all the period, click on the refund application, say like to submit the nil refund application, click on the yes, then it will be redirected to the OTP, and then it will be submitted. And after that, you can file the refund application for April. That would be the initial process. And still, if you face any problem, you can connect with us. If you like the discussion, kindly click on the like button. Kindly subscribe our channel.
And we would ensure if you are actively participating, it would be the motivational factor for us also, and we'll remain continue the series on every Thursday this 7 o'clock or some other time. Probably the time can be changed. Composition taxpayer face his annual return if council is used red mark in the table same table 3B just so dealer can't go. That is okay. That's true. That's true, but it's and they can also say in the same manner na, what they did in the last time. They can use the same pattern. Why there is a requirement to take the cash again and then give the refund subsequently? That can be handled in another way also, but probably the department has chosen this way, which is ideally not correct, create a hardship to all the composite taxpayer, even though they have not taken the excess whatever the negative liability is there, they have paid the taxes properly, but still they are paying the same again. No solution. In 3B, net of the credit note of ITC are to shown separately or reverse column in the 4B of the reversal. Advisable to report the same in the 4B, but it doesn't mean that if someone has reported the same in the net, it will create any problem. No, not at all any problem. But it is advisable to show separately in the table 4B2, GSTR 3B, table 4B2 as an other reversion. Any other question? Kindly subscribe our channel also, and in case of any expectations or any content or whatever you are looking that what educating is doing, you can visit our website educating.com, edukating educating.com. Any other question? Namaskar Ashish ji. Sure, no problem, Shivangi. uh, you can ask the question. We have 5 more minutes, we'll discuss till 7:30. As due date is extended, do we still pay the tax before 20? No. The due date of the taxes is equal to the due date of the GSTR 3B. The due date of the taxes is equal to the due date of the 3B, meaning thereby, if the due date of the 3B is being extended, automatically the due date of the tax is also being extended. Under sales promotion, ITC will be allowed or not? Please explain. 17.5H is the big problem. There are three main concerns for section 17, subsection 5, clause H. There are three major problems. So one is sales promotion versus gift. If I am promoting the sale, and for that purpose, if I'm promoting the sale, and for that purpose, if I'm doing something or if I'm providing something, it cannot be treated as a gift. It cannot be treated as a gift because gift is the voluntary in the nature. So in the sales promotion, in my view, there is no problem at all. Might be at initial stage, he will not accept. He will disallow the ITC. Your proper officer, your jurisdictional officer might be disallow the ITC, but ready for future, ready for litigation, you will definitely win the case. Rohit Divakarji, how are you? Anything changes required in the GSTR for annual return for 21-22 due to the negative liability. So still you have not furnished that GSTR 4. Still you have not furnished. So you cannot do anything. See, point number one, you cannot do anything. We have made the separate video also how to tackle this case. So you can just a couple of videos back, you can discuss, you can see the process I have explained by logging to the one composite dealer, and I have explained the possible solution. But the problem is, if amount is appearing in the negative, you have to pay in cash.
and then you can apply for the refund. You have to pay in cash and then you can apply for the refund. Even though you have not taken any benefit or you have paid the taxes fully for the year, still you need to pay the taxes again to that extent which is appearing in the negative liability. Why it is appearing, reason and possible solution has been explained in the separate video. I request that please visit that video. Morgan Chettiarji, definitely in the initial 10 minutes, I have discussed that Supreme Court judgment of Mohit Mineral as well. So my request would be, you start this video again when it will be uploaded. It will hardly take 10-15 minutes, and then you can see this initially 10 minutes, and probably in couple of days I will have the separate class for all of us. It's free of cost, without there is no charges, to discuss in detail that Supreme Court judgment. Fair enough, Murganji? Kindly confirm. Ajita Kumari ji, good evening, very good evening. In 2017-18, taxpayer claimed excess ITC. During scrutiny, it is found whether the taxpayer can reverse the ITC through their credit note, through their credit, and pay the interest in cash. So, if you ask me, this would not be possible. This would not be possible. So why I am saying so? For example, in the period in which you have taken the excess ITC, let's convert into the number. Let's convert into the number. I have the 1 lakh rupees tax liability, and there was actual ITC of 70,000, but I have taken wrong ITC of 20,000 more. So by which I have paid the amount of rupees 1 lakh by utilizing 90,000 ITC, out of which 20 was wrong or 30 was wrong. In that case, had it been not taken the wrong ITC, repeating the numbers again, 70,000 is your actual ITC, 20,000 you have taken wrong ITC, liability is 1 lakh. So you have discharged 10,000 in cash in that respective tax period. Now what is the problem? If you utilize that wrong ITC, reversing by ITC, that cannot be the solution. Because had it been not taken wrong by you, then you have to pay rupees 20,000 in cash to the department, to the government. Then my point, you cannot use the ITC, but try to discuss with the officer. If he's convinced, you can try to convince. If he's okay, then submit the same. But otherwise, in my view, it should be in cash. Hmm. Council inform any information for delay between property? No, no. Asi Singh ji, manufacturer company want to sell the old truck which is used for the transportation of the goods. Whether notification it, in my view, it would be applicable because it is a motor vehicle. It is a motor vehicle, and you are taking the depreciation as per income tax. So you will cover in the explanation one. You can definitely take the advantage. Pay the GST only on the margin. If it is negative, no GST. Can we take the credit of the RCM 1718? See, uh, 2 point. You, Rajneesh ji, please confirm whether supplier on which you are paying the tax under RCM. So, suppose I am a transporter and I have given the supply to you. You are paying the tax under RCM. You give me the reply whether supplier to whom you are taking the inward supply on which you are paying the RCM, whether supplier is registered in the GST or you are making the self invoice. Based on that, I will give the my view. Sir, if the invoice is signed by unauthorized person, is there any problem in penalty in law? Might be, there would be no issue. In my view, there would be unauthorized person. We cannot say, for example, in a company, there's a multiple location. We cannot say that I will authorize every person. So you may have the internal process of approval that yes, Mr. A can sign. I don't find that will it create the problem, and will there be any penalty? Because whenever the penalty will be imposed in section 125, always officer has to give the general discipline into the mind given in the section 126. General discipline means if there is minor breach,
What is the minor breach? If the tax component is less than 5,000. Tax defaulted is further. If I am not putting the signature on an invoice, it cannot be say that government is having the revenue loss. Answer would be no. In that case, there would be no penalty or can be the minor penalty of rupees 500 each. Ajita Kumari ji. Sir, for self-assessment method, everything is okay? Fine. Let me quickly close the question because I have the regular class at 8 o'clock. So I have to complete the session. But thank you so much for your active participation. And I really love to see that there are so many questions. Even I am taking this discussion approximate after 1 year. It's really good to see your active participation today. Uh, for self-assessment method in QRMP, how we will make the payment from cash ledger is only net banking, over counter, etc. Whether it is system glitches. From cash means only 10,000. Cash means you need to go to the bank, then over the counter maximum 10,000 can be paid. Clear na? It is not the system glitches. They have decided the same. For fixed asset purchase like AC machine, ITC will be taken at one time or 5 years. See, for taking the ITC, you have to mandatory take first immediately in the first year. You do not have the option to apportion in the 5 year. Why? Because 16.4 is there. So they have inserted section 18 clause 6. If you are removing that capital goods prior to the 5 year, you need to pay the tax by comparing two value, whichever is higher. But yes, to answer your question, you do not have the option to apportion 5 year. You mandatorily have to take immediately in the first year. If we can take RCM ITC, then it is possible for refund because it's a big amount for the quote. Sir, one thing, Rajnish ji, whether you are eligible to take ITC or not take ITC, refund can never be allowed of that ITC. We all know that 54 subsection 3, only in two category you can take the ITC ka refund. One is if I am making the zero rated supplies, or second is if my product is under inverted duty. Assuming that you do not cover in any of the category. You do not cover in any of the category. If you are covering in that category, no problem. You file the RFD 01, you would be entitled to take the refund. But there are two problems. First, can you take the ITC of RCM of 1718? Probably you will not be take easily. The time you take, department will raise the concern. So ready for litigation. And second, ITC ka refund you will never be entitled except two cases which I have explained. Achha, and we exported. Oh, great. So 1718, cotton RCM not paid, supplier is not registered. So probably that would be the good case for you. Supplier is not registered because it is agriculturist. Correct? Na? Because it is agriculturist. Then you can say that there would be the self-invoice requirement. There would be self-invoice requirement. You pay in the current date and make the self-invoice in the current date. See, remember, rule 36 of rule when talking about eligible document for RCM is the self-invoice. One second. Hello. So I hope it is clear. Rajnish ji, kindly confirm. Clear, na? Last question for the day, Murgan ji. If invoice serial number not maintained, what is the GST impact? He can determine, or he will look into the matter that whether it is a bona fide problem, bona fide intentionally problem, or there is some mala-fide intention. So there cannot be the fixed penalty which is being prescribed. So if there is a mala-fide intention, then they can determine the tax liability according to section 74, or they can simply levy the penalty in 125. Sir, from electronic cash ledger not able to make the payment in self-assessment method.
No, 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 no. One thing. If you have the sufficient liability in the electronic cash ledger, Ajita Kumarji, please note, if you have the sufficient liability amount in the electronic cash ledger, you are not required to pay any taxes under QRMP by selecting any other option. No, you remove whatever the liability you determined under self-assessed QRMP, whatever the cash balance is available, remove that, and the balance portion you need to pay. You cannot shift that amount which is lying in the cash ledger to the QRMP. You cannot use. But yes, you can refer the circular. You can refer the circular which is talking about if there is a sufficient like amount in the electronic cash ledger, then there is no requirement to deposit the amount by using PMT06. Marriage company, manufacturer company want to sell the old truck on which ITC not available. Fine. And used for the transportation. Can we use that? Answer is I have given assessing. I have given the answer. Yes, you can use that. You can use the notification. The reason number one, truck is a motor vehicle. Okay. As defined in the Motor Vehicle Act. Second point is this is the last question for the day. Uh, First is that motor vehicle, that particular truck is the motor vehicle. Second, taking that appreciation. So you can use the explanation one. You can use the explanation one, which says that the GST to be paid on the only on the margin. So margin to be calculated, selling price minus WDV. So you can definitely use that benefit of 25 Jan 2018 का जो notification है. I hope it is clear to all. So we can conclude our today class. Thank you very much. Really appreciating everyone active participation. Will definitely will definitely try to do the discussion on every Thursday. Timing may be changed, but you please active on the educating YouTube channel and you will get the information. Last question. Rasulji, please provide some information. New GST rate bricks claim. So it is 12% with ITC, 6% without ITC. If you are doing the manufacturing of the bricks, you cannot go for the composition. So that is all about. So we'll meet once again on next Thursday. Thank you very much. Goodbye to all of you.